Hello friends and welcome back to my channel Suraj EVSC. So today what we are going to do is that we will be driving our Nexon EV in the rains, and we'll just see what effect does the rainy conditions have on the watt hour per kilometer and DTE. So 2 days back I have charged my Nexon EV to 100%, and up till now I have driven 152 kilometers. It's almost 38% battery remaining, and the DT now it is showing 109. But of course we will the trip A will be reset to 0 once we start our video. But this is just to give you an idea the way I drive. So considering this reading, I expect my Nexon EV to give me a range of 240 to 250 kilometers. Anyway, let's start today's video. We will reset the trip A to 0. That's it. So let's start. And you can see the rainy conditions over today in Miraj. We are still having good pre-monsoon showers. So that's why I thought, why not make a video of how the Nexon EV performs in rain, because as far as I know, there is no video of such kind on YouTube. Maybe I have not seen it. So friends, thank you very much for the previous videos which everyone has seen and given their valuable suggestions, their valuable feedback, and of course the likes. तो जैसा कि आप जानते हैं, ये रोड मीरज पंढरपुर रोड है, which is being converted to National Highway 166. तो our पहला स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ये रहा. It is the same road, same driving conditions apart from the rains, same driver of course, and the same driving style. तो ये रहा दूसरा स्पीड ब्रेकर आपके लिए. लो जी. तो आज हमने देखना है कि बारिश की कंडीशंस में वाट आवर पर किलोमीटर कैसा बिहेव करता है. सेम रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग, सेम रनिंग करेंगे, सेम डिस्टेंस रनिंग करेंगे और सेम ड्राइविंग स्टाइल में रनिंग करेंगे जैसा कि हम लोग चलाते आए हैं. तो मेरे ख्याल से वाट आवर पर किलोमीटर ज़्यादा कम नहीं होने वाली है रेनी कंडीशंस में. इसका रीज़न मैं आपको अंत में बता दूंगा. इफ़ यू नो इट, जस्ट टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और मेरा जो फाइंडिंग है उसके लिए वीडियो का एंड का इंतज़ार कीजिए. ये है मीरज पंढरपुर रोड, जो कि अब बनने जा रहा है नेशनल हाईवे 166 रत्नागिरी से नागपुर के लिए. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शुरुआत में 0 होने के बाद वाट आवर पर किलोमीटर एकदम से बढ़ जाता है. सो इट हैज़ गॉन टू 169. और अपनी इसी रोड की रिटर्न जर्नी में वो नीचे आता है. तो DT भी कम आ गया.
पूरा बारिश का माहौल है। आसपास में पानी भरा हुआ है खेतों में। काफ़ी भारी बारिश हुई है आज नीरज और आसपास के एरिया में। ये जो प्री मानसून शॉवर्स जिसे बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और हम लोग उसी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। तो आप लोग इस रोड के बारे में आप काफ़ी जान चुके होंगे। तो लीजिए, पहला डाइवर्शन आ गया। हमेशा मैं इसी रोड पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो डाइवर्शन इसके लिए काफ़ी वाइब्रेशंस आ जाती है कैमरा पे। डाइवर्शन ख़त्म हो गया है एंड वी आर बैक ऑन द हाईवे। सो वी विल go to our regular speed of 60 kilometers per hour and coast. तो DTA का जो इनिशियल स्पोर्ट होता है वो जाके अब सेटल हो गया है 160 पे। स्पीड है अभी 160, सॉरी ओनली 60। DTE 91 दिखा रहा है और हल्की बारिश हो रही है अभी भी। एज यूजुअल हम लोग AC भी चला रहे हैं। वी हैव kept the AC at 25 degrees with fan speed at 1. So we are in regular driving conditions as far as possible. The only thing is that the outside temperature is bit low, but to add to it we have rain and the road is wet. So that is what we have to see, how the watt hour per kilometer and DTE performs in wet conditions. तो जैसे ही 5 किलोमीटर्स इस पे दिखा देता है, हम लोगों के लिए दूसरा डाइवर्शन आ जाता है जो कि कलम्बी विलेज में से गुजरता है। इसके लिए वो डाइवर्शन है। अभी यहाँ पे बाईपास बन रहा है कलम्बी के लिए, पर अभी द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। सो वी हैव टू गो थ्रू द कलम्बी विलेज एंड टेक द डाइवर्शन। The speed breaker before Colombi village is approaching. So we approach the speed breaker without using the brake, controlling the vehicle speed through regenerative braking and coasting. As I told you,
you will get to know whenever I use the brakes with the regen bar going up to the second line. So if the regen bar is not going to the second line, rest assured that I have not used the brakes. So the second speed breaker, again single pedal driving, no brakes used. You can observe the watt hour per kilometer is not coming down as it used to be because of the wet conditions on the road. Let's see what it does when we go back towards our destination, because it has been our experience that the journey towards our destination consumes less fuel, and as far as the EV is concerned, less battery is consumed on the trip back to our destination. So another diversion comes up. The car is controlled on regenerative braking, no brakes used. The watt hour per kilometer has risen again. Another diversion. Back on the good road. So another 1 kilometer from here we turn back towards our destination, and we'll see how the watt hour per kilometer comes down and the DTE rises. मेरे ख्याल से अपनी नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में जितना वाट आवर पर किलोमीटर कम होता है उतना इन बारिश के मौसम में नहीं होने वाला है। चलो देख लेते हैं आज वीडियो में। आप बैकग्राउंड में देखते होंगे कि वाइपर हमें कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो बारिश अभी भी हो रही है। So our
turning point is approaching, and we'll turn over here and start our return journey to the destination. शायद इन्होंने आज वो ये बंद कर दिया है. There's some progress in the work. I think they have closed our exit point. We'll go a little further and turn back. No issues. थोड़ा ज़्यादा रनिंग हो जाएगा और क्या है. No problem. Let's see where we get the cut in the median of the highway. There's one cut over there which I can see right now. I don't know if you can see, but the thing you can see is that it is raining continuously. The watt-hour per kilometer is hovering around 163. It is not coming down below 160. Wet and rainy conditions on the road not helping the watt-hour per kilometer. Even the DTA has come down heavily. So there we have a cut in the median. We switch on the indicator and we'll take a U-turn back to our destination. Just a second. So we are on the return journey, and now let's see what difference it makes. The watt-hour per kilometer at 160 and DTE at 66. This area on the road is known as Siddewadi. Remember, when we get back to our destination, the the watt-hour per kilometer comes below 110 on normal conditions. So we'll have to see what the final reading today we get in the wet conditions. You can see the road, it's all wet, full, the water stagnant at some places. There you can see water sprayed by the vehicle in front of us. And so good rains, as I told you, we had this afternoon in Meerut and its surrounding areas. The pre-monsoon showers signaling that the monsoon is on the way and giving a good relief from the heat of the summer. DTE at 155.
Right now we are on the service road of a flyover which is being constructed. TT coming down fast at 150. We are eager to see what the final figure comes to. So approaching a small diversion. So these are water stagnated at some places. We are driving our Nexon through it. No issues whatsoever on the drivetrain or the battery, which is placed under the cabin of the Nexon. In 140s now. The DTE is stabilized. Now it should start its upward reading. It remains stagnant for some time and then it starts increasing. That is the usual trend that it follows. I had to press the brake. We are on a diversion. The auto wipers on the Nexon EV top model, which is the Lux model, has very useful feature, as the speed and switching on and switching it off is not required. It adjusts to the conditions automatically. So you can see
Now whenever we increase the speed, now the wipers which are in intermittent mode will work continuously. Some traffic, so we'll have to slow down. Now see, let's increase speed, go to about 80 kilometers and see if the wiper works continuously. The delay time has decreased. That's the way it works anyway. So let's concentrate on DT and watt hour per kilometer, which is now at 136 and DT is 72. तो ये पहला वाला डाइवर्शन आ चुका है जहाँ पे स्पीड कम करनी पड़ती है अपने को. ये रहा. You'll be surprised why I honked my horn for such a long time. There was some fool in a car. He just threw waste bag on the road. I don't know when people will understand the concept of Swachh Bharat Abhiyan. Isn't it foolish to litter around on the road? मेरे को पता है उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो मैंने इतना हॉर्न उसके लिए बजाया है या किसी और के लिए, बट क्या करें, ये तो होता रहता है. So back to our watt hour per kilometer and DT. Now it is 131 and 73. It had come down to 60s. So as I told you, coasting to the max, regen as low as possible, brakes as and when required. It has been raining since
3:30 this afternoon and still it's raining. So 124 and 74. Final कितना होगा? फाइनल फिगर कितना होगा? मेरा रीडिंग है इट विल बी अराउंड 112 to 115 द वैट आवर पर किलोमीटर. इतना ही कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं. अभी 126 दिखा रहा है. तो ये स्पीड ब्रेकर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं. अपने आगे एक गाड़ी है इसलिए थोड़ा सा संभल के जाना पड़ रहा है. फिर भी नो ब्रेक्स, सिंगल पेडल ड्राइविंग. दूसरा स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, गाड़ी है. कोस्टिंग. हल्का सा स्लोप है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, तो कोस्टिंग. तक आ गए वैट आवर पर किलोमीटर और DT बढ़ के 80 तक पहुंचा है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने ट्रिप भी जो है वो लास्ट सर्विसिंग में मैंने ज़ीरो किया था, रीसेट किया था. तो उसमें अब 6500 प्लस किलोमीटर्स कुछ हुआ है और मेरा ओवरऑल वैट आवर पर किलोमीटर है 99, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है मैं समझता हूँ. तो बैक टू आवर रेनी ट्रिप. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप आगे जाके जब मानसून में गाड़ी से ट्रिप प्लान करोगे तो ये काफ़ी आपको मददगार साबित होगा कि आपका जो रेगुलर वैट आवर पर किलोमीटर होता है तो उससे थोड़ा सा वैट आवर पर किलोमीटर आपका बढ़ने वाला है. और जैसे वैट आवर पर किलोमीटर बढ़ता है तो आपकी माइलेज भी कम होती है. सो कीप दैट इन माइंड. That's the reason I'm making this video, because the watt hour per kilometer will be slightly on the higher side in monsoons,
So if you are planning a trip in monsoon, keep that in mind that watt hour per kilometer is going to be on higher side than your normal driving, and which needless to say will bring down the mileage, overall mileage. So जहाँ पे आपको 250 प्लस देता था, it may give around say 220 to 250. Keep that in mind. Now it is 118. नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग 110 के नीचे आ जाते हैं इस मोड पे. ऑलमोस्ट वी आर एट द डेस्टिनेशन, अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर. सो अगेन वी विल watt hour per kilometer it will come down to 115. It won't get below that. So now let me tell you the reason which I think is the reason for the watt hour per kilometer to be high in rainy conditions. मेरे ख्याल से पानी की वजह से watt hour per kilometer कम नहीं होता है, क्योंकि आपका टायर में जो पानी लगा हुआ रहता है, so that adds to the weight, overall weight on the car, and the car requires more juice from the battery to propel the car along with the weight of the water, and also wading through the water requires more energy. So that is the reason that the watt hour per kilometer doesn't come down as it comes down in normal driving conditions. So we are almost at our destination, and as I told you, the watt hour per kilometer hasn't come down from 117, and the DTE is 87. So friends, this is the final result. We have driven 24 kilometers. Regularly we drive about 21 kilometers. So the extra 3 kilometers we had to go ahead to find cut in the median to get back to our destination, to take a U-turn. So the final watt hour per kilometer stands at 117, and the DTE stands at 87. Thank you. Hope you like this video, and this video will be helpful to you to plan your journey during the monsoon. And again, I wish all of you safe journey, happy journey, and don't forget to belt up while driving your EVs. Thank you.